मैम मैं चैतन्या से पूछ रही हूँ, 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। मैं मतलब अभी तक किसी ने रिस्पॉन्स बस हो गया. Now the co-host, whoever a co-host I made, just your duty is to entering the people, right? यस मैम। It's perfectly 7-4. Let us check. এইসব কথা যখন আসবে তখন বল। Good evening, ladies and
Good evening, ladies and gentlemen. Today, I, Lavanya Shukla, feel extremely privileged and honored to be given this opportunity to welcome you all on a webinar on cancer on World Cancer Day. Sorry to World interrupt, Cancer Lavanya. Day is Sorry to interrupt, Lavanya. First, check your video. Your face is not visible. Is it visible now? No. आप खुद देख नहीं पा रहे हो? Your body is visible, but your face isn't. So you have to just move the camera thoda sa aage. Yeah. Oh, is it visible now? Yes, but just mute the second device. Ma'am, am I visible and audible? Yes, yes, perfect. Okay, I'll restart. Good evening, ladies and gentlemen. Today I am Lavanya Shukla, feel privileged and honored to be given this opportunity to welcome you all on our webinar on World Cancer Day. World Cancer Day is a global initiative led by Union for International Cancer Control to phase one of our greatest challenges. Our main agenda to host this webinar today is to educate the public and the signs and symptoms of cancer to ensure early detection and treatment. On behalf of Advanced Healthcare Foundation, I would like to give a warm welcome to our guests who are honorable doctors and premier hospitals. Today, we are honored to have Dr. Lavanya, you are on mute. Ma'am, I guess I'm having some network issue. I'm like turning off my video for some while. Can you hear me? Yes. Advanced Healthcare Foundation aims to aid in developing a healthy nation, but it is not possible without our founder, Dr. Shreya Chattopadhyay. Now I'll request Shreya ma'am to acknowledge us with her considerable views. Over to you, ma'am. Thank you, Lavanya. Good evening, all. Today is World Cancer Day. To educate the public about the signs and symbols of cancer to ensure early detection and treatment, Union for International Cancer UICC started Cancer Day. We Advanced Healthcare Foundation observe this day every year. The main aim of the day is to raise awareness and reduce the social stigma associated with the disease. The cancer types that mainly affect the Indian populations are lung, breast, cervical, head, neck, and CRC. Today we are here to discuss, educate, and aware people of cancer and its early detection, treatment, and more. We are fortunate enough to have very eminent and senior doctors with us today.
On behalf of Advanced Healthcare Foundation, I, Dr. Shreya Chattopadhyay, welcome Dr. Geeta, Dr. Somnath Roy, Dr. Meenu Walia, and Dr. Kumardeep Roy for today's discussion. They will enlighten us on these. I also welcome the cancer patients who will motivate us and who are actually survival of cancer. Especially, we are thankful to Mrs. Jyoti Goel, cancer warrior, who has come forward and helped us a lot for today's event. I welcome all the participants, some of the school children and teachers from the schools who have an adolescence development club integrated with us, participants from Hindustan Cables and all other participants here today. And last but not the least, I welcome the volunteers from our Adolescence Development Club for their initiative. I also welcome our other director, Dr. Saurav Kole, and our honorable advisor, Mr. Ratnajyoti Datta. I hope you all find the event informative and helpful, and requesting all to feel free to ask questions in your mind. Thank you. Over to you, Lavanya. Thank you so much, ma'am, for your kind words. We'll now be sharing a performance by one of our cancer warriors who will encourage us and our 1,000 patients who are watching us today. My name is Jyoti Goyal. I am a breast cancer survivor. I just want to give a message. हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी यूं ही चलती रहे. Beauty is the most important thing for the ladies. उसी पर एक हास्य प्रस्तुत है. यह सुंदरता की रानी क्या क्या नहीं करती. यह सुंदरता की रानी क्या क्या नहीं करती. सुबह उठते ही भले नहाए ना, पर सबसे पहले देखे आईना. चेहरे का पूरा करती है निरीक्षण. चेहरे का पूरा करती है निरीक्षण. पिंपल्स या झुर्री ने तो ना ले लिया आरक्षण. हर साबुन शैम्पू अपने बाथरूम में पाला. हर साबुन शैम्पू अपने बाथरूम में पाला. चाहे वो बुढ़िया हो या छोटी सी पाला. ढेरों लिपस्टिक पाउडर क्रीम इत्र. ढेरों लिपस्टिक पाउडर क्रीम इत्र. खुद भगवान भी ना करें जिनका जिक्र. क्या सजाती है नाखून इतने लंबे और नुकीले. क्या सजाती है नाखून इतने लंबे और नुकीले. हाय राम नाखून है या कीले. प्यारे भालू तो देख कर ही डर जाएं, और कुंवारे तो दूर से ही भाग जाएं. इस तरह मेकअप को बनाकर अपना हथियार, सज धज कर झांसी की रानी दिल चीरने को है तैयार. And at the end, I want to sing few lines for all cancer patients. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी. छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी. हर पल यहाँ जी भर जियो. जो है समा कल हो न हो. आने वाला पल जाने वाला है. हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो. पल ये जो आने वाला है. हो आने वाला पल जाने वाला है. Thank you so much. This was such an heart-touching performance. This evening, we have Dr. Geeta, who has a work experience of more than 24 years. She's an expert performing the entire range of surgeries for breast cancer. She has contributed actively as an author and co-author in several papers in peer-reviewed journals and participated in several national and international conferences. She joined Max Cancer Center as senior consultant in surgery in 2009.
and has divided her time equally between various centers in the Max Group and has managed to give breast cancer services the right direction. Today, Dr. Geeta will brief us about breast cancer. Over to you, ma'am. Thank you, Lavanya, and thank you, Dr. Shreya, for this opportunity. So today is World Cancer Day, and I will be taking you through the awareness bit because I think the more we do it, possibly we will come to a point of time when people will start presenting early with the disease rather than later. So if I'm allowed to share my screen? Okay. So can you see my screen? Yes, ma'am. Okay, so let me put it on full screen. So this presentation is both in Hindi and English because I'm sure. So what is the language that you would want me to use? Hindi or English or a mixture of both? I think mixture will be better. Okay. So when you talk of breast cancer awareness यानी कि कैंसर जागरूकता के बारे में बात करना बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें पता है कि जागरूकता की ना होने की वजह से कई लोग देर से आते हैं, दे कम लेट. तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि भाई ब्रेस्ट कैंसर को क्या हम जल्दी पता लगा सकते हैं? कैन कैंसर बी डिटेक्टेड अर्ली? कैन ब्रेस्ट कैंसर बी डिटेक्टेड अर्ली? तो कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जिसको कि आप जल्दी पकड़ सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि हम कुछ टेस्ट करा के पता लगा सकते हैं इससे भी पहले कि कोई लक्षण आए. लेकिन इसके लिए क्या है कि नियमित जांच करानी ज़रूरी होती है जो कि अक्सर हम नहीं करते क्योंकि अगर हम ठीक हैं तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाएं. तो अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें जो कि अनफॉर्चुनेटली नंबर 1 कैंसर हो गया है हमारे देश में महिलाओं के बीच. पहले सर्वाइकल कैंसर होता था लेकिन अब जो है ब्रेस्ट कैंसर इज़ द नंबर 1 कैंसर इन आवर कंट्री. लेकिन हमें ये भी पता है कि अगर हम इस चीज़ को जल्दी पकड़ते हैं, जल्दी का मतलब है द अर्लीस्ट दैट यू कैन कैच इट इज़ जब मैमोग्राम में कुछ स्पेक्स ऑफ कैल्शियम दिख रही हैं. तो वो तो तभी होगा ना अगर आप मैमोग्राम कराएंगे और वो चीज़ दिखेगी. तो अगर उस स्टेज में पकड़ते हैं तो 97% महिलाएं जो हैं वो बहुत अच्छा उनका लाइफ इज़ लाइक ऑलमोस्ट लाइक नॉर्मल. बहुत कम चांसेस हैं कि वो दोबारा से तंग करने के लिए आएगा. फिर अगला सवाल ये होता है कि व्हाट आर द रिस्क, व्हाट इज़ द कॉज फॉर ब्रेस्ट कैंसर. तो अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के कॉज के पीछे जाएंगे तो हमें शायद ना मिले, लेकिन हम कहते हैं कि भाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं. देयर आर रिस्क फैक्टर्स टू ब्रेस्ट कैंसर. उसमें कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे कि इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगी. इसी तरह से कुछ होते हैं जो मॉडिफाइबल है. मॉडिफाइबल का मतलब है कि इन चीज़ों को आप बदल सकते हैं. ठीक है, तो मैं अब आपको नॉन मॉडिफाइबल रिस्क के बारे में बताती हूँ. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, महिला होना अपने आप में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है. सो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ वुमन यू आर एट रिस्क बिकॉज women are 100 times more affected by breast cancer than men. तो ये भी एक बात याद रखने की कि ऐसा नहीं कि आदमियों में नहीं होता. हर साल 1% ब्रेस्ट कैंसर्स जो है वो पुरुषों में होता है और 99 जो होता है वो महिलाओं में होता है. तो ये एक रिस्क फैक्टर कि इसको आप बदल नहीं सकते हैं. और दूसरी है कि एज, जो रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर का वो एज के साथ बढ़ता जाता है. लेकिन हमारे देश में ये भी देखा जा रहा है कि जो अंडर 40 है, अबाउट 15% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर हैपन्स अंडर द एज ऑफ 40, जो कि डबल है जो विदेश में होता है. विदेश में 7% कैंसर्स जो होते हैं वो 40 से नीचे होते हैं. फिर होता है फैमिली हिस्ट्री. अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर फैमिली हिस्ट्री हो तभी कैंसर होगा, ऐसा नहीं है. ये ज़रूर है कि 15% लोगों में फैमिली हिस्ट्री मिलेगी. तो फैमिली हिस्ट्री में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट डिग्री का मतलब हुआ मदर, सिस्टर, डॉटर. तो ये हुआ फैमिली हिस्ट्री रिस्क. इसको भी आप बदल नहीं सकते. इसी तरह से जेनेटिक रिस्क, अगर कोई जीन्स में आपके खराबी है जो कि आपके मदर से पहले क्या मतलब ग्रैंड मदर या पैटर्नल या मैटर्नल किसी भी साइड से अगर वो खराबी ट्रांसमिट हो रही है फैमिली हर जनरेशन दर जनरेशन, तो फिर इस बीमारी के होने का रिस्क होता है. लेकिन वो भी केवल 5 से 10% महिलाओं में ही देखा जाता है. इसी तरह से अगर आप किसी को पहले एक तरफ ब्रेस्ट कैंसर हो चुका था तो दूसरी तरफ ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क 1% पर ईयर होता है. इसी तरह से कभी कभी ब्रेस्ट लंप निकाली जाती हैं और उसकी अगर जांच नहीं होती तो हो सकता है उसमें कोई ऐसा राज छुपा हो जो बता सके कि शायद आपका रिस्क ज़्यादा हो. इसलिए कभी भी कोई गांठ निकलवाइए तो उसकी जांच करानी बहुत बहुत ज़रूरी है.
इसी तरह से पीरियड्स कब होना, अगर पीरियड्स जल्दी होती हैं और देर से बंद होती हैं तो वो भी एक रिस्क फैक्टर हुआ, क्योंकि आपके लाइफ टाइम में आपका हार्मोनल एक्सपोजर उतना ही लंबा हो जाता है। और अब देखने में आता है कि बच्चियां जो होती हैं 8, 9, 10 साल में उनको पीरियड्स शुरू हो जाती हैं, जिसका कि हमारे खाने पीने से ज़रूर लेना देना है, खास करके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का, जो कि हो सकता है कि उन पशुओं से निकाला जाता हो कि जिसको कि ग्रोथ हार्मोन का या ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया गया हो। इसी तरह से अगर आप किसी रेस को बिलोंग करती हैं, जैसे एश्केनाज़ी ज्यूज़ हैं मिडल ईस्ट में, उनमें देखा गया है कि उनमें ब्रेस्ट कैंसर की नंबर्स जो है ज़्यादा हैं। वो इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि उनमें इन फैमिली मैरिंग बहुत होता है, कंसैंग्युनिटी जिसको कहते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में भी ऐसे जनजातियाँ, जैसे कि तमिलनाडु में आप देखेंगे कि अंकल की नीस से शादी हो रही है या फर्स्ट कज़न्स में शादी हो रही है। इसी तरह से गुजरात में, नॉर्थ ईस्ट में आपको ऐसे फैमिलीज़ मिलती हैं और वहाँ पे कैंसर ज़्यादा मिलती हैं। अब मैं आती हूँ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स पे, जिस पे आपका बस चल सकता है, जैसे कि आपका कब आप अपने बच्चे पैदा करते हैं। कोशिश यही होनी चाहिए कि 30 से पहले हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि 30 के बाद कर नहीं सकते, लेकिन 30 से पहले करें तो आपका रिस्क कम होता है। इसी तरह से अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, 5 या 10 साल से ज़्यादा का आपने लिया है, तो आप बंद कर दीजिए, क्योंकि इसका भी अभी एक कोरिलेशन पाया गया है। इसी तरह से वो महिलाएं जिनको कि मेनोपॉज हो जाता है, और क्योंकि उनको वो सिम्टम्स मेनोपॉज की बहुत ज़्यादा मुश्किल कर रही होती हैं, जैसे हॉट फ्लशेस होती हैं या बोन पेन्स बहुत बढ़ जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, कार्डियक इश्यूज़ होती हैं, तो वो फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट शुरू कर देती थी। ये 90s में बहुत पॉपुलर था। फिर अर्ली 2000 में एक स्टडी आया जिसने दिखाया कि अगर आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी 5 साल से ज़्यादा लेते हैं तो आप में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क काफ़ी, मतलब 3 to 4 टाइम्स बढ़ जाता है। इसी तरह से हमारी जो आदतें हैं ये भी हमारे कंट्रोल में है। कोशिश करिए कि अल्कोहल अगर लेते हैं तो बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये WHO का करंट रिकमेंडेशन है। लेकिन अगर लेना ही है तो नॉट मोर देन अ ड्रिंक इन अ वीक। इसी तरह से ओबेसिटी यानी कि वज़न का ज़्यादा होना, ये हमारा एक नेक्स्ट नया एपिडेमिक होने वाला है कि जहाँ पे लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक्टिविटी कम होती है, खाने पीने के बहुत सारे साधन हैं, खासकर कि वो चीज़ें जो आपको न्यूट्रिशियस नहीं होती हैं, हेल्दी नहीं होती हैं, जो जंक फूड के नाम से या प्रिजर्व फूड होती हैं, उनकी वजह से वेट का बढ़ना। और वेट का बढ़ना जो है, क्योंकि फैट सेल्स में कांस्टेंट इन्फ्लेमेशन जब रहता है तो उस तरह से कई कैंसर्स होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब तो ऐसा होता है ना कि कोई चीज़, छोटी सी भी चीज़ खरीदनी हो तो स्कूटी में बैठ के चले जाते, चाहे वो 100 मीटर पे क्यों ना हो। तो अब अपना ध्यान रखिए, इस मामले में ध्यान रखिए कि अगर आपको मार्केट जाना है तो पैदल जाएंगे और सब्जी के जो बैग होगा उसको ढो के लाएंगे, ये नहीं कि वहाँ से रिक्शा कर लिया और घर पहुँच गए। तो फिज़िकल एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 3.5 आवर्स, 3.5 आवर्स पर वीक, हफ्ते में, मतलब कि आधा घंटा रोज़ का तो निकाल के रखिए। और वो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज होनी चाहिए। ये मत कहिए कि मैं सैर पे जाती हूँ और अपनी फ्रेंड के साथ जाती हूँ और गप्पे मारते हुए जाती हूँ, वो एक्सरसाइज नहीं हुआ। तो आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, जिससे कि आपको लगे कि आपका सांस हल्का हल्का फूल रहा है, तो वो होता है मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज। तो हम लोग इतना ज़्यादा क्यों बोल रहे हैं कि भाई अर्ली डिटेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अर्ली डिटेक्शन जब स्टेज 0 होता है तो 100% चांसेस होते हैं सर्वाइवल के। यही चीज़ अगर आप स्टेज 4 पे चले जाते हैं तो ये 20% से ज़्यादा नहीं होता। इसीलिए जितना जल्दी पकड़ेंगे बीमारी को, उतना अच्छा इलाज, उतना सरल इलाज और उतना ही अच्छा आउटकम। तो हमारे को ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने के 3 तरीके हैं। उसमें से एक तो है कि आप हर साल अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कहिए कि भैया हमारा ब्रेस्ट एग्जामिन कीजिए और बताइए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और दूसरा होता है कि मैमोग्राम करा लिया। 40 साल पर आप बेसलाइन करा सकते हैं, 2-2 साल में या 3-3 साल में कराइए। लेकिन 50 साल के बाद आपका अगर हाई रिस्क है तो 1.5 साल में कराइए, और अगर लो रिस्क है तो 2 से 3 साल में तो पक्का आपको स्क्रीनिंग मैमोग्राम कराना चाहिए। लेकिन अगर ये सब कुछ संभव नहीं है तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जहाँ तक कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का डॉक्टर से सवाल है, तो 20 से 40 के बीच में हर 3 साल में एक बारी, और 40 के बाद तो हर साल एक ट्रिप ज़रूर लगाइए और हेलो कराइए अपने सर्जन से या ब्रेस्ट सर्जन से। और इसी तरह से मैमोग्राम जो है, जैसे मैंने कहा, अगर हाई रिस्क है तो सालाना, और अगर हाई रिस्क नहीं है तो 2 साल में एक बारी, तो 2 या 3 साल में एक बारी कराइए। लेकिन
ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जो कि आपको मंथली करना चाहिए, बिल्कुल शिद्दत से कीजिएगा उसको। मैमोग्राम क्या होता है? मैमोग्राम होता है ब्रेस्ट का एक्सरे, जो कि जैसे मैंने बताया कि ये उस समय कैच कर सकता है कैंसर को जबकि कोई सिम्टम आपको फील नहीं हो रहा। इसको हम स्क्रीनिंग मैमोग्राम कहते हैं। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कब करना चाहिए? जिन महिलाओं को पीरियड्स आ रही है वो 2-3 दिन बाद करें, और जिनको पीरियड्स बंद हो चुकी है या तो वो फर्स्ट ऑफ द मंथ करें या अपने बर्थडे या एनिवर्सरी के साथ कोइंसाइड होता हुआ डेट कर लें। कैसे करते हैं? आपको बेस्ट टाइम होता है जब आप नहाने जाते हैं, जब आप शावर में होते हैं, आपके पास शीशा भी होता है सामने, तो उस समय आप अपने फ्लैट ऑफ द फिंगर्स से करते हैं। फ्लैट ऑफ द फिंगर्स यूज़ करिए ताकि आप अपने पूरे ब्रेस्ट को अच्छी तरह से जांच सकें। और उसमें आपको क्या करना है, क्या देखना चाहिए आपको? आपने देखना है, बाजू उठा के देखिए कि कोई निप्पल डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, आपका निप्पल अंदर धंस तो नहीं रहा, कोई डिम्पल तो नहीं पड़ रहा आपके स्किन पे, कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा आपके निप्पल से, आपके निप्पल का लेवल ऊपर नीचे तो नहीं है, आपका एक ब्रेस्ट दूसरे ब्रेस्ट से बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं। ये सब चीज़ें आप नोटिस करेंगे मिरर में। और फिर जब आप जांचेंगे तो आपको लेट कर भी जांचना है और खड़े होकर भी जांचना है। और क्या करना है? आपको अपने ये फ्लैट ऑफ द फिंगर्स यूज़ करनी है। इसको पूरे ब्रेस्ट में आपको प्रेस करना है, रोटेट करना है, स्लाइड करना है, प्रेस करना है, रोटेट करना है, स्लाइड करना है। और ये आप ऐसे अच्छे से सिस्टमैटिकली करें। हाथ को बहुत ज़्यादा मत उठाइए, ये किया और फिर यहाँ भाग पहुँच गया, ऐसे नहीं, बिल्कुल स्लाइड करिए ताकि कोई हिस्सा मिस ना हो। और आपको निप्पल वाला एरिया भी एग्जामिन करना है, और ये निचला हिस्सा जो अक्सर मिस हो जाता है उसको भी जांचना है 3 फिंगर्स के साथ, और वो भी फ्लैट के साथ। टिप के साथ मत करिए और ब्रेस्ट की टिश्यू को पकड़ कर मत करिए, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा लम्प्स होने का एहसास होता है। तो इनमें से कोई भी चीज़ हो, या तो लंप हो या निप्पल डिस्चार्ज जो अपने आप आ रहा हो, ब्लडी हो या क्लियर हो, ब्रेस्ट साइज़ में चेंज हो या स्किन में चेंजेस हो, जैसे कि संतरे के छिलके जैसा हो रहा आपका चमड़ी, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। तो अब मैं कुछ गलतफहमियां जो ब्रेस्ट कैंसर के साथ है उनके बारे में आपको बताऊंगी। एक गलतफहमी ये है कि अगर मेरे ब्रेस्ट में लंप है तो पक्का कैंसर है। ऐसा नहीं है। 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स जो है वो ब्रेस्ट कैंसर नहीं निकलता है, बिनाइन होता है, लेकिन जांचना ज़रूरी है, क्योंकि हम उन 2 लोगों को कैसे पकड़ेंगे अगर हमने उन सबको नहीं चेक किया जो एक लंप के साथ आते हैं। क्योंकि हमारा मकसद है कि वो ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिस करनी चाहिए। मैंने जैसे कहा फैमिली हिस्ट्री ज़रूरी नहीं है ब्रेस्ट कैंसर के होने के लिए। इसी तरह से मेन को ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, ये भी गलत है। मेन में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इसी तरह से विमेन इन द 40s एंड 50s ओनली ब्रेस्ट कैंसर होता है। ये मैंने कहा आपको कि 40 से कम में भी होता है। इसलिए ब्रेस्ट जांचने के लिए कोई उम्र नहीं है। 20 साल पे आप ज़रूर अपने ब्रेस्ट को जांचिए, क्योंकि जितना फेमिलियर होंगे आप अपने ब्रेस्ट से, उसके बैकग्राउंड में कुछ भी आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। इसी तरह से एंटीपर्स्पिरेंट्स और डिओड्रेंट्स के बारे में बहुत कहते थे कि उससे ब्रेस्ट कैंसर होता है। एक और गलतफहमी जो है, जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, कि ब्रेस्ट की नीडल घुसाने से ब्रेस्ट कैंसर फैल जाएगा, ये भी बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि डायग्नोसिस के बगैर आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। मैमोग्राम करने से ब्रेस्ट कैंसर फैलता है, ये भी बिल्कुल गलत है। मैमोग्राम तो एक डायग्नोस्टिक टेक्निक है जो बहुत ज़रूरी है। और ये भी एक मिथ है कि अगर हाई रिस्क है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसा नहीं है। जो लाइफस्टाइल वाली चेंजेस आपने लानी है वो तो ला सकते हैं ना। स्मोकिंग बंद कर सकते हैं, अल्कोहल का सेवन मत करिए, आप एक्सरसाइज करिए, अपने वेट को कंट्रोल करिए, ये सब चीज़ें आप ज़रूर कर सकते हैं। हाई फैट डाइट लेने से कैंसर हो सकता है? कैंसर ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन आपका वज़न बढ़ेगा तो वो एक वजह हो सकती है कैंसर होने की। चोट लगने से कैंसर होता है? बिल्कुल गलत। चोट लगने से आपका ध्यान आकर्षित होता है उस लंप को जो कि पहले से ही था, लेकिन अब जाकर आपको पता चला है। और साइज़ का कोई लेना देना नहीं है ब्रेस्ट कैंसर से, बड़ा हो या छोटा, कैंसर किसी भी तरह के ब्रेस्ट में हो सकता है। और ये सबसे बड़ा मिथ है जो मैं आज बिल्कुल ही इसको ध्वस्त करना चाहती हूँ, कि अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर होगा तो आपका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत है। अब इतना अच्छा इलाज आ गया है। पिछले 20 सालों में तो कई ऐसी दवाइयाँ आई हैं जिसने स्टेज 4 को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया। हम लोग अब ब्रेस्ट कैंसर को एक क्रॉनिक डिजीज़ कहने लगे हैं 4th स्टेज में भी, क्योंकि 4th स्टेज के पेशेंट्स भी 4, 5, 6, 10, कई बारी 15 साल तक जी लेते हैं। तो हमने तो अब देखा है कि जितना अर्ली डिटेक्ट करते हैं तो उनका तो खैर बहुत ही अच्छा होता है, तो लेट केसेस में भी कोई ऐसा बुरा अंजाम नहीं होता। तो मैं आपको बस यही कहूँगी कि
हमें अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस लानी है, हमें अपने शरीर के बारे में बहुत बहुत जागरूक होना है, जो लक्षण वो बता रहा है उसके बारे में सुनना है, सोचना है और करना भी है। करना क्या है? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। तो मैं आपको आज ये आश्वस्त करना चाहती हूँ कि अर्ली डायग्नोसिस और अच्छे ट्रीटमेंट के साथ बहुत सारी महिलाएं कैंसर का, जो ब्रेस्ट कैंसर का जो वो बीमारी है, उससे निजात पा रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही स्क्यूड है, क्योंकि वो महिलाएं जो रूरल एरियाज़ में, उनके लिए ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो इस वर्ल्ड कैंसर डे जो थीम है वो ये है, यू क्लोजिंग द केयर गैप। हम वो केयर का जो गैप है उसको कम करना चाहते हैं। तो आप जैसी सशक्त महिलाएं ज़रूर इस कैंसर के केयर गैप को कम करने में हमारी ज़रूर मदद करेंगी, और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हो जाएं। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। Thank you so much, ma'am. Now I would request for the questions, please. Ma'am, can I ask questions? Sure. Yes, please. Actually, ma'am, I was your patient. Right now also I am your patient. Shashi, my name is. Actually, I am your neighbor also. Yesterday we, one month back we met also. Yes. Actually, ma'am, ultras या tamoxifen, how many years we have to take, ma'am? Actually, I have taken for 5 years tamoxifen. After that, some complex has come in uterus. It has been removed by after suggestion of US only. And right now I am on ultras from 2017 onwards. Right, it is 2022. So How now many? you can stop. Now you can stop. So now what has happened is the recommendations keep changing. So at the time you may have started treatment, the recommendation was 5 years. And now it is said that for the high risk groups, you should continue hormonal treatment for at least 10 years. So now that you've completed 10 years, you can stop. I am right now, ma'am, 45 years old. That's why how many? मतलब अभी previous April I have I came for checkup and I didn't get anything worse. Now April I have to come back again. So अभी मैं ऐसे बंद कर सकती हूँ क्या? चेकअप के बाद बंद कर दीजिएगा। अच्छा। और वन मोर थिंग मैम, मेरी सिस्टर को ब्रेस्ट में सिस्ट हुआ था थोड़ा सा। वो एक्चुअली वो उनको मतलब वहां पे हैदराबाद में वो उसको डॉक्टर ने कहा कि वो जस्ट सिस्ट ओनली, आपको रिमूव कराना है बस, और कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है बोल के। वो कोई मतलब ये नहीं है ना कि प्रॉब्लमैटिक ऐसा सिस्ट हो गए तो मेरी हिस्ट्री की वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, सिस्ट बाय इटसेल्फ इज नॉट ट्रबलसम। पानी वाली गांठें आती जाती रहती हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से आती हैं, और यंग लोगों में काफ़ी होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बट नथिंग टू वरी। और आप एक चीज बोल रहे थे मैम, फोर्थ स्टेज। ये फोर्थ स्टेज क्या होता है मैम? कब तक क्या होता है? मतलब मुझे अब ये डाउट आ रहा है, मेरा कौन सी स्टेज था उस टाइम? मेरा तो यही ऐसे I think we can take all this question then in person, please. We are yes, I think proceeding so, for the we are proceeding for the next question. Yeah. Sorry. Thank you. There's one question from the chat box. What steps needs to be taken for not recurrence of breast cancer? So lifestyle modifications, like we know, like, you have to take care of your diet, your exercise, keep yourself in a positive frame of mind, go for your follow-ups, keep getting checked by your doctor physically. So all that is suggested to you has to be taken care of. But that does not mean that recurrences don't happen. The reason why everybody is scared of breast cancer is this, that, things can come back. Even in stage 1s, you see 10% of breast cancers coming back, So all of those things are there. But yeah, you have to keep doing the right things for yourself to reduce your risk of recurrence. Thank you, ma'am. Next question. Akanksha, you want to ask any question?
Ma'am, I have one question actually. Generally, we ladies, we are sometimes facing breast pain. So, is there any relation of breast cancer with the breast pain? So, breast pain is very rarely associated with breast cancer. Only in 6 to 7% of patients you will find patients presenting with pain as the first symptom of breast cancer. Okay, so not to worry for this breast pain Not because sometimes we thought like that. no. Any other queries from the YouTube also? Any other query? I have a question. Please How ask. often should a self-examination needs to be done for an individual, and does it depend? Does it have any age factor related to it? So, what examination? Breast self Yeah, examination? self-check. Yeah, Self check self-check exam. every month, like I told you. Oh, Once in every month, which I understood that. That's why she Every told month maybe is to fix. just create familiarity because it's like driving on the same road every day. You would know where the speed breaker is, you would know where the lamp post is, you would know where to turn. You could do it blindfold after a certain point of time. The thing is, if you suddenly touch your breast one day and try to figure out, some people have very bumpy breasts, some have soft breasts, and the bumpy breast, you may think, oh, there's something wrong with me. So basically, it is about familiarity. Okay? True. So I think we do not have any more question because you actually Excuse me, explained it ma'am. so well. Sure, sure. Good evening, ma'am. Ma'am, do the increasing breast size is the reason of breast cancer also, Sorry? or it's concerning for that? Sorry, come again? Ma'am, is the increasing breast size at the large speed is a concern? No, the size, like I told you, does not matter. Size is not a risk factor. The only problem is in larger size breasts, sometimes it is difficult to pick up abnormalities. In smaller breasts, if something happens, it is easier to pick it up. In larger breasts, sometimes it is difficult to do a breast self examination, and even clinical breast examination for the doctor can be a little tough. Otherwise, it does not increase your risk per se. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Dr. Geeta, for your brief and informative presentation. Next, we have Dr. Somnath Roy with us, who is consultant in Department of Medical in Calcutta. Dr. Before that, Somnath is Lavanya, dedicated. Lavanya, we should just play one more video of a cancer patient, right? Sure, ma'am, we can Then share that. thank you. Yes, ma'am. हेलो, नमस्ते। मैं वनमाला केकरे, ब्लिस ग्रुप भोपाल से। 21 साल पहले मुझे कैंसर हुआ था। कीमोथेरेपी हुई, रेडिएशन हुआ, सब कुछ हुआ, और मैं अब तक डॉक्टर के संपर्क में हूँ। जैसे जैसे वो बताते गए हैं, वैसे वैसे मैं करती गई हूँ। तो सभी कैंसर पेशेंट से मेरा यह अनुरोध है कि आप अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार करते रहिए, इलाज करवाते रहिए। और कहना मेरा ये भी है कि कैंसर से हमें डरना नहीं है, हमें कैंसर से लड़ना है और उसे हराना है, हमें नहीं हारना है। मैंने 1-2 पैरोडी बनाई है, तो आप यदि सुनेंगे। पहले मैं कैंसर पेशेंट कहलाती थी। ब्लिस ग्रुप में आने के बाद हमें ब्लिस ग्रुप ने चैंपियन नाम दिया है। तो अब मैं उस पर 2 लाइन बताऊंगी कि पहले हम कैंसर पेशेंट थे कभी, पर अब है चैंपियन। ब्लिस ग्रुप ने हमें ये नाम दिया और जीत गए हैं हम। और अब मेरा ये विश्वास है कि कैंसर भागेगा एक दिन, भागेगा एक दिन, भागेगा एक दिन, एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, कैंसर भागेगा एक दिन। जा रे
जारे भाग जारे कैंसर, दुनिया को छोड़ के जा रे, यहाँ क्या है तेरा प्यारे, क्यों दुनिया को तू जाड़े, जा रे भाग जा रे कैंसर। तो मेरा अंत में भी यही कहना है कि हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। जो ईश्वर करेगा वो तो होगा, पर हम यदि डर कर जिएंगे तो जी नहीं पाएंगे। तो कैंसर से डरना नहीं है, हमें कैंसर से लड़ना है। नमस्ते। This was such an heart-touching performance. We are moving ahead with Dr. Meenu Walia. She has a work experience of 30 years of treating cancer patients. She's also the first DNB medical oncologist in India and achieved several awards. For a moment, Dr. Walia is just away for an emergency and she will be right back in another 10 minutes. Oh, sure. Okay, It's no not- problem. Then we would request Mr. Datta. Lavanya, please announce about him. Yeah, sure. We are moving ahead. Yeah, should Sorry. We are should I- moving ahead with Dr. Datta. He is a senior consultant and unit head. He has Lavanya, an we should experience- request Mr. Ratnajati Datta. Let me tell you, no problem. So, Mr. Ratnajati Datta is our national advisor, honorable national advisor for Advanced Healthcare Foundation. And today, he will highlight a very particular topic because we are doing cancer awareness over this social media. So, on this particular topic, he will tell you something. Over to Mr. Datta. Thank you, Shreya ma'am. Good evening to all viewing this program. My greetings to all present here on the occasion of World Cancer Day. I laud the efforts being made by our medical and research professionals against cancer on the occasion, and also salute the resilience of the cancer survivors, as we have seen in some of the videos. My tribute also to those who succumb after putting up spirited fight. The word cancer does not evoke fear among the masses as it used to be, say, 2, 3 to 4 decades ago. This is because we have realized the fact that the timely detection and an early start of the treatment are instrumental for long survival of any patient, even after detection. Cancer is one form or the other, has touched directly or indirectly almost all families worldwide. Prevention, as we know, is always better than cure. This basic awareness rule also holds true to combat the occurrence of cancer. Now, as Dr. Shreya ma'am, she has said that I would highlight a bit about the digital media and awareness. Now, in a digital era, multimedia platforms should be utilized to spread the success stories of cancer survivors. It is very important to create a 360-degree awareness. Digital awareness can be promoted through such a webinar like today's, organized by Advanced Healthcare Foundation. I do believe such a webinar involving medical experts would go a long way in spreading the element of awareness, which is the need of the hour. My sincere gratitude to all those viewing this program today. Thank you all. Thank you so much, sir, for your kind words. This was such an informative speech. Dr. Somnath Roy is there among us. So, Lavanya, can you please introduce him?
Next, we have Dr. Somnath Roy with us, who is a consultant in Department of Medical in Calcutta. Dr. Somnath Roy is dedicated and devoted towards his field and will enlighten us today with his views on lung cancer. Over to you, sir. Yeah, good evening. Am I audible? Yes, sir. Good evening. Yeah, good evening. So thanks to the organizer for introducing and invite me for this Eve of World Cancer Day to give us awareness on the lung cancer. So I am Dr. Somnath Roy, consultant medical oncologist at Tata Medical Center, Kolkata. So today I am just want to discuss some salient point of World Cancer Day, in the eve of World Cancer Day, the lung cancer. The lung cancer is a burning issue of today's among cancer patients. The incidence is increasing, and as well as is one of the most common cancer in the as per the Globocon data, as well as the scenario in this in our state, particularly or not only India, but also in West Bengal, the incidence is rising with an average estimated increase of death rate also. So it is a burning cause of morbidity as well as mortality. And the most commonly it affects the smoker with a chronic smoker with a history of at least smoking of the 10 to 20 packs years, as well as in the common in the non-smoker as well as females. Most commonly, patient presented with us with a long duration of cough, weight loss, and sometimes chest pain, and this occasional on-off hemoptysis. So these are the common symptoms, and we can usually pick up it by X-ray or subsequently by the CT scan. And if we see this CT scan, there is a definitely there will be a, either due to pleural effusion or there is a lesion in the mass also. Sometimes it spreads along with the metastatic disease like bone pain in the or like this is the CNS spreads. It is in advanced stage. So most commonly the biopsy should be done from the diagnosis aspect, because as I eagerly want to mention among the population, there is a misconcept of doing a biopsy will spread the cancer and they are avoiding of not doing biopsy. This is totally wrong concept, because nowadays the lung cancer is there's a lots of therapy and lots of newer drugs is coming out to challenge the overcome the challenge of morbidity and death of the lung cancer. So diagnosis is most important, and for this we have to do CT guided biopsy or cytology with cell block and as molecular analysis. So don't afraid regarding biopsy. All lung cancer patient before start treatment needs biopsy and other molecular testing, and it will require some time. Sometimes patient is worried about after doing this biopsy and doing this all molecular tested, it will require 2 to 3 weeks. For that time, it may progress. There is some progression, but as our current standard of medical care, we should do biopsy as well as the molecular testing for lung cancer, because it is huge therapeutic implication, and it is also predictive as well as prognostic markers. Apart from these, the screening regarding the common population is also important. The low dose CT scan, as well as there is some examination of a clinical as well as sputum examination is also important. Although these are not routinely done in our cancer screening program, but it should be implemented in general physicians also. This is important to early identify the disease as well as early prompt of diagnosis and treatment. So primary or primordial prevention is most important rather than secondary or tertiary prevention. This is also important.
And one thing is in the current of COVID era, there is a COVID with lung cancer, and the literature says those which are patients with the COVID infections and subsequent having lung cancer, the morbidity and mortality is increased because patient is suffering from lung cancer, subsequently infected with the COVID. The lung is already bad, so COVID is also more damage the lung, and this kind of patient is more vulnerable to early goes into the mortality and death. So the randomized trial and the meta-analysis shows in the current COVID era, the morbidity and mortality of lung cancer patients in COVID is more rather than the other cancer subtypes. So it should be also a burning issue in the COVID and lung cancer concomitantly we have to deal with. And sometimes it is very difficult to interpret the diagnosis because patient comes with a previous COVID infection and the COVID related changes was there in the CT scan. So we have to identify, we have to pick up it is either COVID related changes or due to malignancy, the cancer itself. So also it is a dilemma. So definitely we have to keep in the mind of subsequent and concomitant differentials of lung and COVID. So it is also important. And one thing important to mention because today's World Cancer theme is care gap, the gap. In our Indian scenario, the awareness programs is more important, and also the more access for the general in population for the various access barriers is also a different issue, important burning issue. So this is also important to reach these important medications like oral tablets, chemotherapy, immunotherapy, the most commonly used drugs in lung cancer in the most common peoples, like the district and sub-district levels also. So this is also important. And the concomitant COVID infections and important identification of the COVID with the proper vaccination is also important. Another most important I have to mention, the third dose of COVID vaccination can continue in patients who are receiving chemotherapy or any treatment of lung cancer patient. So it is recommended, and there is no such contraindication, no such barrier to stop or not give to vaccine. Vaccination should be done in the first, second, or subsequent third dose, even patient in the lung cancer on subsequent on chemotherapy also. This is most important. The common awareness program is needed to the common people should know there is no as such there is a recommendation or no as such barrier to not to give vaccines. So this is important. So thank you. And I last want to mention all patient cancer is a challenge, and lung cancer definitely is a challenge of our day-to-day practice, and we have to fight with in a jointly manner. Thanks. Thank you so much, Dr. Rai. I would now request further questions. Yeah. Sir, I was having one question that air pollution is a big concern nowadays. So I have also heard that regular exposure to bad air causes lung cancer. Is there any way to protect ourselves from it? Definitely air pollutions and some minerals and heavy metals causing lung cancer, not only lung cancer, but also some other cancer also. So in the current of COVID era, all of us were wearing masks. So it is also important that mask sometimes protective for the pollution. If we use N95, there is some filter, and the exposure of dust, minerals, and heavy metals, as well as smoke also, there to some extent decrease, the exposure is decreased because all of us for the last 2 years wearing masks. And I think it will remain for the entire period. Wearing mask is a common problem. There's a part of our regular dresses. So definitely it causes and relations temporal association with cancer, lung cancer. But using proper protection as well as air filtration as well as this source elimination is most important.
or pollution-free air is important. For this, regulatory approvals from the government is also needed from the identify the source and stop the export. This is important. Thank you so much, sir. Any other query? Any other question? Yes, ma'am. Thank you, sir, for enlightening us. I wanted to ask that should a patient expect any treatment-related side effect during lung cancer? Treatment-related side effect in definitely any patient of lung cancer patient undergoing treatment, he has some side effect like infection. There is a chance of infection, chance of pneumonia, chance of low blood counts, chance of diarrhea and GI infection, as well as he needs vomiting, nausea, vomiting, diarrhea, everything. It is common side effects of treatment of patient who is undergoing lung cancer. Thank you, sir. Any other question? Otherwise, I have one question actually. Yes, yes. So the patient who are suffering from COPD, is there any chance for lung cancer as well? As such, COPD is not directly correlated with the lung cancer, but if patient is COPD with a background of COPD, there is a morbidity of lung cancer will be high. That means if patient is a COPD or asthma, the symptoms and the severity is more if that patient develop lung cancer. But it is not directly associated with lung cancer. Okay. Thank you so much, sir. Very informative, and we all, I hope, all like and got the proper information of this, because the main problem is that we generally do not have proper information. Yeah. Thank you so much. Any more question, or we will just proceed? Okay, Lavanya, what you? We are moving ahead with Dr. Meenu Walia. She has an experience of 30 years of treating cancer patients. She is also the first DNB medical in India, has achieved several awards like Dronacharya Award by Honorable Minister of State Healthcare and Family Welfare. Today, ma'am will provide us some essential information about prevention and advancements related to cancer. Over to you, ma'am. Thanks, Lavanya, and thanks, Jyoti dear and Dr. Shreya for the opportunity. And on this World Cancer Day, I really think it's a privilege, and kudos to all your efforts that you have done in connecting people all over the country and your efforts to spread awareness. This is something which is very passionate and very close to our hearts as oncologists. And I hope we do justice to the session. आपकी इस मेहनत रंग लाए, और इस मेहनत की वजह से अगर हम किसी एक लाइफ में भी डिफरेंस कर पाते हैं, तो I think the session will be worth it. So let me share my screen, please. Sure. So what do you want the medium of communication? I think mixed. Mixed. So I think mixed is the best. And we will, and it should not look like a didactic lecture. It is more to, I mean, कुछ हमने आपसे सीखना है, कुछ हम चाहेंगे कि आप भी कुछ हमारी बातों को सुने. I hope the slides are visible. मेरी slides दिख रही हैं? Yes, ma'am. ठीक है. So मुझे ज्योति मैम ने बोला था कि मुझे बात करनी है जनरल कैंसर्स के बारे में, कोई स्पेशल कैंसर के बारे में नहीं. तो हमने सोचा कि हम सबसे पहले तो एक कैंसर के बारे में ये बताएं कि ये कैंसर है क्या. जब पूरी दुनिया इस बीमारी से परेशान है और हर आदमी सोचता है कि ये कैंसर एक ही बीमारी है, जो ज्यादातर लोग नहीं समझते हैं या नहीं जानते हैं कि कैंसर एक बहुत ज्यादा ग्रुप ऑफ डिजीजेस है. मतलब 200 से भी ज्यादा डिफरेंट टाइप के कैंसर्स होते हैं, और उनमें एक ही अंडरलाइन कॉमन होती है कि जो कैंसर के सेल्स हैं वो हमारे शरीर के नॉर्मल सेल्स से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं. वो बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं, बहुत जल्दी रेप्लिकेट करते हैं, और हर तरह के एडवर्स एटमॉस्फेयर में भी वो सर्वाइव करते हैं.
वो आसानी से मारे नहीं जाते, आसानी से मरते नहीं है। मतलब एक तरह से वो बदमाश सेल्स होते हैं, और बेचारे शरीफ जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनके ऊपर उनका न्यूट्रिशन लेके उनके ऊपर ये सेल्स पनपते हैं। एक तरह से इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी, कैंसर के सेल्स जो हैं वो हमारा ही एक परफेक्ट वर्जन है, जिनको मारना, जिनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और इसी वजह से हम कैंसर को कहते हैं कि वो एक टाइप का कैंसर नहीं होता, 200 से भी ज्यादा कैंसर होते हैं। क्योंकि कैंसर का नाम कैसे पड़ता है कि वो कैंसर, यही वाले जो सेल्स जो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो नॉर्मल सेल्स नहीं है, ये अब नॉर्मल सेल्स शरीर के कौन से पार्ट से, अगर वो लंग से स्टार्ट होते हैं तो हम उसे लंग कैंसर कहते हैं, अगर ब्रेस्ट से शुरू होते हैं तो हम उसे ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। मतलब शरीर के जिस पार्ट से भी शुरू होते हैं, और कई बार आखिरी स्टेज में सभी पार्ट्स में होते हैं, पर उनका ओरिजिनल कैरेक्टर वही रहता है कि जिस पार्ट से वो शुरू हुए हैं। अगर हम ग्लोबोकॉन की ये फिगर्स देखते हैं तो काफी डरावनी फिगर्स हैं, और इसमें मैं सभी को कहूंगी कि सिर्फ एक चीज पे ध्यान दीजिए कि तकरीबन 50, मतलब ऑलमोस्ट हाफ द केसेस ऑफ कैंसर ऑल ओवर द वर्ल्ड कहाँ से हैं? हमारे एशियन सब कॉन्टिनेंट से। सो हमारे देश के आसपास वाले देश, हमारा एशिया इस कैंसर का एक इम्पॉर्टेंट जोन है जहाँ पे कैंसर बहुत ज्यादा पनप रहा है। और आने वाले टाइम में कहा जाता है कि इंडिया में बी द कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो हम इस बीमारी से कैसे लड़ें, कैसे लड़ पाएंगे? इन द वर्ड्स ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन, इंटेलेक्चुअल्स दे सॉल्व प्रॉब्लम्स, बट जीनियस कौन होता है? जीनियस होता है जो प्रॉब्लम को होने से ही पहले ही उसको भाप सके। सो हम कैसा, एक तो होता है कि कैंसर हो गया तो इलाज तो कराना है, बेस्ट जगह पे जाना है जहाँ पे सारी टेक्निक, सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। पर लेकिन क्या हम कुछ कर सकते हैं कि हम कैंसर को प्रिवेंट करें या कैंसर हो ही ना? हाँ, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जनरली मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि ऑलवेज फॉलो द 4 राइट्स। क्या है ये 4 राइट? सही खान पान, ईट राइट, वर्क राइट, सही आपकी फिजिकल एक्टिविटी, मेंटेन द राइट वेट एंड फॉलो द राइट हैबिट्स। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी करेंगे। अच्छा खान पान क्या है? एक बैलेंस डाइट। कहते हैं कि हमारे खाने की वजह से भी अगर हम डाइट को कंट्रोल करें तब भी हम बहुत सारे कैंसर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? बैलेंस डाइट होनी चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट, मैं टाइम के अभाव की वजह से मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगी क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, बट इंपॉर्टेंट टेक होम्स आई विल वांट टू से कि हमारे इंडियन किचन में क्या होता है। हमारी इंडियन किचन में लेडीज की एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आदत होती है, चाहे हम उसे अच्छी आदत बोले या किफायत की आदत हो, कि हम जिस ऑयल को सुबह पूरियां मतलब सुबह तलेंगे उसी को दोपहर को यूज करेंगे और उसी को शाम को यूज करेंगे, बिकॉज हम वेस्टेज में बिलीव नहीं करते। But these are simple things we do not know. कि what we are doing is we are increasing the carcinogenic behavior of things. मतलब जब हम रीहीट करते हैं कुकिंग ऑयल को तो उसमें कुछ टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, एक्रोलिन जैसा, और वो कैंसर कॉज कर सकते हैं। सो हमें इन छोटी छोटी आदतों को सुधारना है। हमें प्रोसेस मीट नहीं खाना है, हमें रेड मीट अवॉइड करना है जितना हम कर सकते हैं। तो रेड मीट की जगह हमें क्या प्रेफर करना है? व्हाइट मीट। व्हाइट मीट में क्या होता है? फिश, चिकन। So it is better to avoid red meat. It is better to avoid processed meats. Processed meat is considered to be carcinogenic. And two very very important, what we say, the white poisons in our kitchen. कौन सी है ये white poison? नमक और चीनी। And another white poison that the Indian kitchens have, that is मैदा। अगर हम इन चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या कम से कम यूज करें तो हम काफी हद तक कैंसर जैसी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम अपनी डाइट में फ्रूट्स और सैलेड्स को इंक्लूड करें, अच्छे पोर्शंस ऑफ फ्रूट्स एंड सैलेड्स रहे, तो इवन हम कैंसर को 1/5 तक, 20% तक कैंसर के रेट्स को कम कर सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल को सुधारें, ना स्मोक करें, ना किसी को स्मोक करने दें। अल्कोहल का सेवन कम से कम करें या अल्कोहल को रिस्ट्रिक्ट करें। वेट को एक ऑप्टिमम वेट मेंटेन करें। फिजिकली एक्टिव रहें। फिजिकली एक्टिव,
अगर हम हफ्ते में 3 बार भी आधे आधे घंटे के लिए सैर वगैरह ब्रिस्क वॉक करते हैं, तब भी हम कैंसर के रिस्क को बहुत ज्यादा कम करते हैं। सिर्फ कैंसर ही नहीं, बहुत सारी और बीमारियां उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। यस, फ्रेंडशिप इज गुड एंड दैट डज नॉट मीन कि रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए हर बार जब गेट टुगेदर हुए तो ड्रिंक करना जरूरी है। वी हैव टू प्रोटेक्ट रिलेशनशिप, बट डिजीज इज नोबडीज फ्रेंड। कल को जब बीमारी आती है तो शायद फ्रेंड्स भी नहीं रहते। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अल्कोहल को हम रिस्ट्रिक्ट करें। हम जाने कि अल्कोहल की क्या लिमिट होती है, क्योंकि तंबाकू, टोबैको एंड अल्कोहल, ये दोनों के दोनों कैंसर, बहुत ज्यादा कैंसर को कॉज करते हैं। ऑलवेज बिलीव इन एक्वा मैजिक। पानी पिए, जितना ज्यादा पी सकते हैं, 2 से 3 लीटर, अनलेस आपको किसी डॉक्टर ने मना करा है बिकॉज ऑफ सम अदर इलनेस, क्योंकि इसी से पानी ही हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। ब्रेस्ट फीड जरूर करें, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट ये हमें प्रोटेक्ट करता है। एक सेफ सेक्स को प्रैक्टिस करें, बैरियर मेथड्स को यूज करें, सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ लिमिट करें अपने सेक्सुअल पार्टनर्स को, और हमेशा प्रोटेक्शन करें, क्योंकि इन्फेक्शन से को प्रिवेंट करने का यही सबसे ज्यादा कारगर, जेनिटली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने का यही सबसे ज्यादा कारगर तरीका है। स्किन कैंसर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। फॉर्चुनेटली हमारे इंडियन स्किन में कम होता है, पर लेकिन होता है। इसलिए नो दैट कि हाउ एट व्हाट टाइम ऑफ द डे एंड व्हाट आर दिस, वेदर वी शुड यू शुड बी यूजिंग सनस्क्रीन यूज करें, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग यूज करें, और सन से भी डायरेक्ट सूरज की किरणों से अपने आप को बचाएं। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम अपनी फैमिली हिस्ट्री तो चेंज कर नहीं कर सकते, तो अगर हमारी फैमिली में कैंसर है तो हमारा रिस्क ज्यादा है। यस, हम अपनी फैमिली हिस्ट्री नहीं चेंज कर सकते, पर हम अपनी फैमिली हिस्ट्री जान सकते हैं। अगर हम अपनी फैमिली हिस्ट्री, फैमिली ट्री को जानते हैं, तो ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि कौन से कैंसर्स का रिस्क ज्यादा है और हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, या उसके लिए क्या स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं, या क्या उसके लिए जागरूक हो सकते हैं। एंजेलिना जॉली को मुझे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं इसको, पर सभी, शायद बहुत सारे लोग जानते हैं कि इन्होंने डबल मस्टेक्टमी करवाई, प्रोफिलेक्टिक मस्टेक्टमी कराई, पर लोग ये नहीं जानते कि क्यों कराई, क्योंकि इनकी फैमिली में बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री थी कैंसर की। और इन्होंने जब अपना जेनेटिक टेस्ट कराया तो पाया गया कि इनमें कुछ ऐसे जेनेटिक जीन्स की अबनॉर्मेलिटी है, ब्रेका म्यूटेशन है, जिससे कैंसर का रिस्क इनका बहुत ज्यादा हाई प्रिडिक्ट करा। So ये क्या genetic, so that is the importance of knowing your family history. So these tests are available in our country also. So we need to know, does it mean कि हम सब जाके अपना genomic test कराएं? No, it does not mean that. But it does mean that we be aware of our family history, we be aware of what are the risk of cancers, and we be aware, we talk to our doctors कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अपने genomic test करने चाहिए। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी हेल्थ अवेयर। बहुत सारे कैंसर हम स्टेज 0 में पकड़ सकते हैं। कैसे? अगर हम स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर में सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट याद करने के मतलब आसान से स्क्रीनिंग टेस्ट है। हर महिला, एवरी लेडी 20 years and above, what she should do? She should do every month breast self examination. YouTube is full of videos on breast self-examination. There will be enough educational material in every hospital how to do a breast self-examination. 30 years and above, what every lady has to do? Every lady has to get a clinical breast examination done. 40 and above, mammography. A very simple basic x-ray of the breast. तो ये सिंपल तरीके हैं जिसको हम कहते हैं ब्रेस्ट स्क्रीनिंग। 20 के बाद ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, 30 के बाद क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और 40 के बाद मैमोग्राफी। इन चीजों से भी हम कैंसर को बहुत अर्ली और बहुत सारे केसेस में स्टेज 0 में भी पकड़ सकते हैं। तो जो महिला अपना रेगुलर स्क्रीनिंग कराती हैं, देयर इज साइंटिफिक डेटा दैट टेल्स अस कि उनमें जो ब्रेस्ट कैंसर पकड़ा जाता है, जो एवरेज साइज ऑफ द ब्रेस्ट लंप है, दैट इज लेस देन हाफ इंच, और जो जिनमें एक एक्सीडेंटली ब्रेस्ट लंप डिटेक्ट होता है उनमें उसका ऑलरेडी साइज तकरीबन 1.5 इंच के करीब होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आधे इंच और 1.5 इंच की जर्नी
किस टाइम में हुई होगी और किस टाइम में एक स्टेज कहाँ पहुंची होगी। यही इंपॉर्टेंस है एक अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ने की। और ना केवल ब्रेस्ट कैंसर, बहुत सारे और भी कैंसर्स हैं जिसे हम स्टेज 0 में पकड़ सकते हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, एक सिंपल सा पैप स्मीयर जो किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के ओपीडी में आप करा सकते हैं, और ये भी कैंसर को स्टेज 0 में पकड़ सकता है। हर लेडी को मोर देन 20 इयर्स ऑफ एज सर्वाइकल कैंसर की भी स्क्रीनिंग करानी चाहिए, चाहे वो पैप टेस्ट कराए हर 3 साल में या 30 साल के बाद पैप टेस्ट एंड HPV को टेस्टिंग कराए हर 5 सालों में। आज की डेट में ये कैंसर जिसकी संख्या इतनी ज्यादा है कि हर 10 मिनट में कोई ना कोई महिला हमारी कंट्री में सर्वाइकल कैंसर की वजह से अपनी जान खोती है। इसको हम टोटली प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन से। So we should ask ourselves, we should ask our friends, have they got their young daughters vaccinated? Have they got their sisters vaccinated? What is the right age to get the girls vaccinated? 10 after 9 years of age. 9 to 45 is the recommended age. 9 to 26 is the best age. If you get vaccination done before 15 years of age, तो शायद 2 ही डोजेज की जरूरत है और 3 वैक्सीन की 3 डोजेज की जरूरत नहीं है। इसी तरह से सिर्फ यही कैंसर नहीं जो लेडीज के कैंसर है, बहुत सारे और कैंसर है जिनके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है, हम जल्दी पकड़ पाते हैं। फॉर एग्जांपल कोलोरेक्टल कैंसर या अंतड़ियों का कैंसर, या फिर पुरुषों में एक बहुत अनदर इम्पोर्टेंट कैंसर है विच इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट कैंसर। So prostate cancer can also be picked up by a simple digital rectal examination or a simple blood test, जिसे हम कहते हैं serum PSA testing, which should be done beyond the age of 50, and if there is a family history then possibly earlier. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम कैंसर को बिल्कुल शुरुआती स्टेज में, स्टेज 0 में पकड़ पाते हैं। और भगवान ना करे अगर किसी को कैंसर हो जाए तो हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की डेट में कैंसर का इलाज बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है। सिर्फ स्टैंडर्ड पुरानी टेक्निकों के अलावा हमारे पास बहुत सारी नई टेक्निक्स भी हैं। अपार्ट फ्रॉम द लोकल ट्रीटमेंट जिसमें हम सर्जरी कहते हैं और सिकाई रेडिएशन कहते हैं, उसके अलावा वी हैव लॉट ऑफ सिस्टमिक ट्रीटमेंट सो दैट वी कैन kill cancer completely. And what are these systemic treatments? Apart from the age-old chemotherapy, you have now so many other things, and neither is the chemotherapy that painful because you can do certain things. You can put chemopores, you can put PICC lines and make the administration of chemotherapy simpler. You have more advanced molecules, you have targeted therapies. Targeted therapies बहुत सारे केसेस में आपको शायद कीमो देने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल टैबलेट से, सिंपल टारगेटेड थेरेपी से और एक which are called as the magic bullets, आप कैंसर को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज अ न्यू ब्रांच which we also say is immuno-oncology that boosts your body's immune system to such an extent कि you can fight with the cancer cells. So the message that everybody should go with today is that जैसे 2 इंसान सेम नहीं होते वैसे 2 कैंसर भी सेम नहीं होते। आज की डेट पे बहुत सारे एडवांस टेस्ट है, एडवांस जांचें हैं जिससे हम कैंसर के मॉलिक्यूलर सिग्नेचर को पहचान पाते हैं और बिल्कुल एडवांस तरीके से उसको पर्सनलाइज कैंसर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो हर कैंसर का मरीज, हर स्टेज के कैंसर का मरीज, हो सकता है उसका मॉलिक्यूलर सिग्नेचर डिफरेंट है और हो सकता है किसी को हम सिर्फ कीमो दें, किसी को टारगेटेड थेरेपी दें, किसी को इम्यूनोथेरेपी की जरूरत है या किसी को शायद एक डिफरेंट टारगेटेड की। हर पेशेंट को बेस्ट करना, एक मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट देना और जो बेस्ट उसके लिए है उसके मॉलिक्यूलर सिग्नेचर के हिसाब से ट्रीटमेंट करना, यही आज की डेट में कैंसर का मेन कैंसर ट्रीटमेंट का नया तरीका है। एंड हाउ डू वी continue all these things? Because there are n number of stories of hope all around us. So these are glimpses of some of our beautiful patients. Like we used to have been doing fashion shows for these patients, and these are the patients who had the courage to take cancer in their stride and walk on stage, walk on ramp walks, go for cycling events and so many other events, even beyond cancer. So cancer was just a chapter in their life. It was not the entire story. They wrote their story themselves. So cancer could not stop them.
So how will anybody else could stop? So we have n number of cases, stage 4 breast cancer living beyond 10 years. So many of them brave soldiers who have taken cancer in their stride. And even, I mean, we should all consider ourselves fortunate that we are in a country where best of resources are available, best of technology is available. There are certain people who belong to certain countries जहाँ पे cancer की इतने advances नहीं है, and they travel all the way from all these countries to come and take treatment in our hospitals. So we are fortunate. The all we need is that we need to be aware. We need to be aware about the signs and symptoms of this disease, and we need to go full throttle. And it is the smile and the courage of all these patients that give us the courage, confidence also to continue with what we are doing and try to improve every minute, every hour. And this is always my favorite slide in all my sessions. Always, I wish one day when we talk about cancer, you all think about the zodiac sign. It is not the disease cancer that comes to our mind, it is the zodiac sign cancer that comes to our mind. With that, but we all realize this, yes, there are miles to go before we all sleep. So thank you so much. Thank you all. Thanks for the opportunity. Superb. Thank you so much, Dr. Walia. Now, I would request all of you if you have any question. Thank you, ma'am, for the informative session. I have heard that music have the ability to cure many diseases. So, is there any possibility that it can prevent cancer or cure it? I'm glad that you asked this question. This is, I strongly personally believe that for every disease, the reason is stress. The reason is stress in some way or the other. And if anything, any methodology, if it can release our stress, possibly will decrease the changes that happens at the cellular level and will decrease the incidence of diseases in us. We do not have adequate research. We will never have adequate samples to say that music therapy will prevent cancer or music therapy helps in treatment of cancer. My only request will be, yes, there is no way denying that music can be soul warming. Music can be a stress buster, and music indirectly will help us both in prevention and treatment of cancer. But music should not be taken as the only therapy. If we want to listen to the music that appeals to us, we should all go ahead and do it. But that doesn't mean that I do not go for the proper treatment or proven treatment, evidence-based treatment. Neither does it mean that I do not go for the preventive things like no to tobacco, no to alcohol, physical exercise, physical activity, and screening tests. They should also go hand in hand with these other therapies. Thank you, ma'am. Any other question? Ma'am, as you have said that the technology has become very advanced in case of treating the cancer. So can a person be treated if he is diagnosed in his last stage of cancer? Can you come again, please, beta? Ma'am, can a person be treated well when he is diagnosed in his last stage of cancer? So basically, Bache, the idea of all these sessions is why we want to create awareness about cancer is because in cancer, everything is all about the stage of cancer. The earlier you detect cancer, less will be the expenditure, less invasive will be the procedures, less will be your treatment duration, and better will be the results. More will be the chances of cure. But as the stage advances, everything becomes vice versa. Your chances of cure decrease, your treatment expenditure increases, your treatment becomes longer, everything else becomes vice versa. So, yes, some cases of stage 4 cancer do live for a very, very long time. But if I'm thinking of cure, then our best odds are always the earlier you catch the disease, better will be your chances of cure. Thank you, ma'am. My one more question was that what is basically the average expenditure for treating the cancer? So average, so again, as I said, beta,
no two cancers are same. No two cancers, even if I talk about lung cancer, within lung cancer, adenocarcinoma, no two lung cancers or adenocarcinomas will be the same. So every patient is different. Every patient with the same cancer in the same stage is also different, because we just cannot make a generalized statement about what will be the expenditure of cancer. But all I can tell you is this is definite, that earlier you catch cancer, the expenditure is much less. The later stages that we catch cancer, the expenditure also increases exponentially. Thank you so much, ma'am. Thank you. Any more question? Otherwise, I have one question, ma'am. Nowadays, actually, we generally hear that people are discussing like that the chemicals which are using in the food, for these we are rather developing the cancers. So, do you think organic food is better for that? So, frankly, Dr. Shreya, I strongly feel, and I think we have scientific evidence also to say that cancer is mainly a lifestyle related disease. It's more of a lifestyle related disease than inherited genetic disorder. And lifestyle is basically the food we eat and the water we take. And unfortunately, whatever we are eating and drinking today has got so many alterations and perturbations. We know that there is so much of what you say, synthetic food available. So many coloring agents are used, so much of pesticides are used, so many of different storage things are used. For example, I mean, there is evidence that processed meat is carcinogenic. Why is it that? Because we are artificially trying to save the meat for a longer shelf life, and in that processing process we use the material that is used that contains nitrites and nitrates. So those preservatives contains nitrites and nitrates in the processed food, which are known to be carcinogenic. Yes, for example, we have been using the green revolution thanks to the usage of pesticides in our country. But yes, the farmers, they started using pesticides, but nobody, I mean, so unfortunate, they have been taught to use pesticide, but how much to use, where to stop, is something that is sincerely lacking. So एक बार जिस फार्मर ने एक फसल उगाई, पेस्टिसाइड थोड़ा सा यूज करा, बड़ी अच्छी फसल हुई, कीड़ा नहीं लगा, तो फिर अगली बार पेस्टिसाइड का शायद यूज और ज्यादा हुआ, फिर और ज्यादा हुआ, कीड़े तो नहीं लगे, बट ये कीड़ा नहीं लगा तो ये जो है फसल है जो हमारे अंदर जा रही है, दैट इज ऑल विथ सो मेनी, आई मीन, वही जहर जो एक क्वांटिटी में कीड़े को मार सकता है, तो वही जहर हमारे शरीर में कुछ तो करेगा, वही चेंजेस करेगा. Even the same, our industrial waste. I mean, we all talk about ki Ganga saaf karo, rivers should be clean, air should be clean. Our industrial waste, I mean, sadly speaking, we still are far from the fact that the way we dispose them, all that goes into our rivers, all that goes underground, and this is the water that we finally drink, and this is the water जो हमारे खेतों को सींचता है. So it all, what we are giving to the nature, it is all coming back to us. So rightly, yes, अगर हम organic food लेंगे, तो I strongly feel that we will probably be able to cut down the incidence of cancer. But then again, lot of ifs and buts. Organic food को आपको उगाना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सिंसियरिटी चाहिए, और ये सब एफर्ट्स की जरूरत है. और unless the youth of today, they wake up that we have to really do something for our environment, it will be a far cry. Thank you so much, ma'am. I hope this is very informative, and अभी जो हमारे पास जो audience है, including YouTube, उनको भी बहुत अच्छा लगा, because naturally again the thing is that हमारे पास proper information नहीं है, तो कैंसर टर्म सुन के हम लोगों को लगता है जो तब तो हो गया सब कुछ खत्म अभी जिंदगी में. So thank you so much. Over to you, Lavanya. Thank you so much, ma'am. We'll now be presenting a performance by a cancer warrior.
राधे राधे। मैं श्रेया मखीजा, प्रोफेशनल काउंसलर हूँ और करियर गाइडेंस, पेरेंटिंग एंड रिलेशंस में डील करती हूँ। साथ ही मैं ब्लिस फाउंडेशन जैसी प्यारी फैमिली की मेंबर भी हूँ, जिसका सपोर्ट मुझे हमेशा मिलता रहता है। मुझे 2016 में बोन मैरो कैंसर डायग्नोस हुआ था, जिसका ट्रीटमेंट कीमो, रेडिएशन और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के थ्रू हुआ था। उसके बाद जून 2021 में ये रिलैप्स हुआ और फिर से मेरा पूरा ट्रीटमेंट रिपीट हुआ। अब मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है और मैं बिल्कुल ठीक आपके सामने हूँ। मुझे लाइफ से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बहुत छोटी छोटी सी कुछ बातें शेयर करनी है। सबसे पहले तो ये कि ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और बहुत सिंपल है। बस हमने इसे अपने इफ एंड बट्स, तेरा मेरा और ये नहीं होना था, ये नहीं करना था कह के कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। जो भी लाइफ में चीज़ें आती हैं उसे अगर हम एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं तो कुछ भी नहीं है। और दूसरा ये कि आज मैं पेशेंट्स के लिए कुछ कहना चाहती हूँ कि यदि हमें कोई बीमारी होती है या लंबी बीमारी के बारे में हमें पता चलता है तो पेशेंट्स की एक्सेप्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं, बहुत उनका व्यवहार थोड़ा चेंज हो जाता है और कभी कभी उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनकी कोई सुन नहीं रहा है। अगर एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो ऐसा नहीं होता है, पूरा परिवार उसकी सेवा में लग जाता है और वो चाहता है कि हमारे परिवार का जो भी सदस्य है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो एज ए पेशेंट्स हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम उनकी किसी काम में हेल्प नहीं कर सकते, डिपेंडेंट हैं, लेकिन हम उनके लिए थैंकफुल तो हो सकते हैं। हम संतुष्टि का भाव तो चेहरे पर रख सकते हैं और मुस्कुराकर उन्हें देख तो सकते हैं। उनके किए हुए कामों को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि आप इतना कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि वर्कलोड तो फैमिली का बढ़ता ही है। और अगर उस बीच में वो आपसे बात कम कर पाए या नहीं बैठ पाए आपके पास, तो उसकी कंप्लेन करने की बजाय कुछ ऐसा व्यवहार करना है हमें जिससे कि वो अपने आप हमारे पास आए। तो उनको भी इस चीज़ से मोटिवेशन मिलता है, उन्हें भी संतुष्टि मिलती है कि उनके जो एफर्ट्स हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और हल्की सी मुस्कुराहट देने से इतनी अच्छी हीलिंग होती है पर्सन की कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी समझते हैं। हम जब मुस्कुराते हैं तो हमारी हीलिंग के साथ साथ सामने वाले की भी हीलिंग होती है। इसलिए जो पेशेंट्स हैं वो इस बात का अगर ध्यान रखेंगे तो वो अपनी लाइफ में कुछ अलग तरह के पॉजिटिव चेंजेस फील करेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और यदि आपके आसपास या आपकी फैमिली में कोई पेशेंट है तो उसे सपोर्ट ज़रूर दीजिए, उसका साथ दीजिए, उसका सहारा बनिए। सच मानिए इस समय हर पेशेंट को सहारे की, अपनेपन की बहुत ज़रूरत होती है। मुझे मेरे अपनों का सहारा मिला, अपनापन मिला, इसीलिए मैं आज आपके सामने मुस्कुराते हुए यहाँ पर हूँ। बस आज इतना ही। थैंक यू। राधे राधे। This was such an heart-touching performance. We'll now be carrying forward with another performance by a cancer warrior. हाय, मेरा नाम रुचिका सचदेवा है और मुझे नवंबर 2016 में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था। अब मेरी लाइफ मैं कहती हूँ कैंसर ने बदल दी है और खूबसूरत बना दी है। जिस तरह एक कैटरपिलर बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, उस तरह मेरी लाइफ भी अब खूबसूरत पंखों और रंगों के साथ में है। हाँ, ये जर्नी ज़रूर मुश्किल थी, लेकिन वो कंप्लीट होने के बाद में पूरा ऑपरेशन हो गया, फिर 16 कीमो हुई हैं, उसके बाद 32 रेडिएशन हुए हैं, लेकिन उसके बाद जो लाइफ ने मोड़ लिया है वो बहुत ही खूबसूरत है। अब एक एक पल हम जीते हैं और हमें साथ मिल गया है ब्लिस फाउंडेशन का। उसने हमारी ज़िंदगी को समेट दिया, एक नया परिवार दिया है और उनके साथ मिलकर अब हम ये चाहते हैं कि दूसरों की लाइफ में भी वो चेंज लाए, वो खूबसूरती से उनका एहसास कराए जो ज़रूरी है लाइफ के लिए, जिसकी हम वैल्यू नहीं करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती है, एक नॉर्मल शैम्पू करना किसी के लिए क्या सेलिब्रेशन हो सकता है, लेकिन हमने उस एहसास को भी जिया है। और जब मैंने ट्रीटमेंट के बाद पहली बार मैंने शैम्पू करा था तो दैट वाज अ सेलिब्रेशन फॉर मी।
So now life is a celebration and we should enjoy it to the fullest. हाँ, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो सब लेडीज़ को करनी चाहिए. अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, 40 के बाद एक मैमोग्राम ज़रूर करवाइए और अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखिए ताकि कभी भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो आपको फाइनेंसिस के बारे में सोचना ना पड़े. और बाकी ज़िंदगी की दूसरी मुश्किलों से भी खूब हंस के लड़िए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए. Wow, this was such a motivational speech. Dr. Kumardeep is here, Lavanya, so I think we can start his program. Sure, ma'am. Now we have Dr. Kumardeep Datta with us, who is a senior consultant and a unit head. He has an experience of more than 10 years. Today, Sir will provide us information about psychological effects of cancer on our patients and relatives. Over to you, sir. You are on mute, sir. Am I audible? Yes. Yeah, the screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Thank you, Dr. Shreya and your team for giving me this opportunity to speak on this August gathering. So today, आज मैं basically psychosocial problems for patients and जो उनके relative है जो face करते हैं, जिसके बारे में बहुत कम बातें होती है, बट मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पोर्टेंट है. क्यों इम्पोर्टेंट है? बहुत बार हम लोग सोचते हैं, बहुत बार ऑफन, कि हम एक ही तरह के दो पेशेंट है, सेम एज की है, ऑलमोस्ट सेम एज के है, आपने एक ही दवाई दी है, बट दो लोग अलग अलग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. एक को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ, बहुत लंबा लाइफ मिला, but the other second person is not responding that well. What could be the reason for that? What could be the reason? तो उसमें एक कहीं ना कहीं ये जो साइकोसोशल स्ट्रेस और जो उसके जुड़े हुए प्रॉब्लम्स है, शायद वो भी रिलेटेड है उसमें. जो लोग बहुत हंस के ट्रीटमेंट लेते हैं, मैंने देखा है कि हम लोग की क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि उन लोगों की साइड इफेक्ट भी कंपैरेटिवली कम होता है. जो साइड इफेक्ट के कारण भी एडमिशन नंबर भी बढ़ जाते हैं, एडमिशन एंड कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं. तो वो चीजें भी जो लोग एक इंसिडेंट की तरह लेते हैं, कैंसर इज नॉट एंड ऑफ लाइफ, उस तरह से लेते हैं, हंस के ले लेते हैं, उनको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता. रेदर देन दो अदर पर्सन जो थोड़ा सा डिप्रेस्ड, थोड़ा सा एंजाइटी में, थोड़ा सा स्ट्रेस में, जो घबराहट बोलते हैं कि घबराहट हो रहा है. सो दे आर बेसिकली, एंड एज ए क्लिनिशियन हम लोगों का क्या काम है? हम लोगों का काम है कि जो फर्स्ट विजिट पे कोई भी आ रहे हैं, उनका जो साइकोसोशल कंपोनेंट है उसको हम एड्रेस करें फ्रॉम वेरी फर्स्ट विजिट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट कई बार मैंने देखा है कॉलीग से या उसमें जो है ये पार्ट भूल जाते हैं, विच इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट. कोई कैंसर की इलाज कराने आ रहे हैं, कैंसर का सर्जरी, कैंसर की रेडिएशन या कैंसर का केमोथेरेपी ही ट्रीटमेंट नहीं है. ट्रीटमेंट का ये भी साइकोसोशल पार्ट भी एक बहुत अहम भूमिका लेता है. हर एक आज के डेट पे हर एक हॉस्पिटल में, हर एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाएंगे, एक सोशल वर्कर मिलेंगे, सोशल वर्कर इन द ब्रॉड सेंस, और दोज हु आर वर्किंग ऑन द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ द पेशेंट्स. वो भी है मोस्ट ऑफ द सेंटर्स में. जहां पे मैं था इनिशियली, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, वहां पे मैंने पहले देखा था कि एक सोशल वर्कर, साइकोसोशल वर्कर हु इज मीटिंग विद द पेशेंट्स डेली, आस्किंग अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड बियॉन्ड प्रॉब्लम्स. घर में क्या है, घर की बातें भी करना. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रेस फैक्टर फॉर द पेशेंट्स एंड द रिलेटिव्स, जिसके थ्रू वो पास ऑन करते हैं. बिकॉज स्ट्रेस की बहुत सारे फैक्टर होते हैं, स्ट्रेस के कारण बहुत सारा होता है कि वेदर आई विल सर्वाइव. बिकॉज डायग्नोसिस ऑफ कैंसर में ऐसा एक वो है, स्टिग्मा है लगा हुआ कि कैंसर हुआ तो हम बचेंगे नहीं,
जो 50s और 60s में था कि ट्यूबरकुलोसिस हुआ तो ट्यूबरकुलोसिस डेथ, बट कैंसर भी आज के डेट पे कैंसर भी ऐसा डायग्नोसिस हो गया तो कैंसर का मतलब है डेथ, बट विच इज नॉट ट्रू ऑलवेज, विच इज नॉट ट्रू ऑलवेज। इवन जो स्टेज 4 डिजीज सर्वाइवर है, इवन डॉक्टर मिन्नू वालन ने भी डिस्कस किया है, बहुत सारे पेशेंट की फोटोग्राफ एंड स्टोरीज शेयर किया है मेरे पास। हर एक के पास, हर एक ऑन्कोलॉजिस्ट जो लंबे दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पास लंबे पेशेंट है, 20 years patient diagnosed with metastatic breast cancer for 20 years, patient is living a normal life like you and me। आपके साथ वो रहेंगे, आप बता भी नहीं सकते कि कौन से पेशेंट है, कौन है सर्वाइवर है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से मोस्ट ऑफ द टाइम। तो साइकोसोशल फैक्टर में एज ए डॉक्टर्स हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या देखते हैं? फर्स्ट विजिट में मैंने बताया कि फर्स्ट विजिट में हमें देखना चाहिए, तो बेसिकली जो टर्म है साइको सोशल एंड ऑल दिस स्ट्रेस, आई डोंट वांट टू लाइक टू यूज दैट टर्म, एंड दिस इज most of the oncologists they are not using that term often. The term distress was chosen unanimously because it is more acceptable and less stigmatizing than the other terms which are used interchangeably, sounds normal, less embarrassing, and can be defined, measured by the self-report. Distress is multifactorial, unpleasant experience of a psychosocial, social, spiritual, and or physical nature that may interfere with one's ability to cope effectively with the cancer, its physical symptoms and treatment. Distress, it is a continuum of terminology ranging from the very common normal feeling of vulnerability, sadness, fears, to problems that can be disabling like depression, anxiety, panic, social isolation, etc. So standard of care for the distress management, it should be recognized. मतलब हमें फर्स्ट विजिट पे पेशेंट जब फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में, जहां पे जो भी पेशेंट आ रहे हैं, ज्यादातर कोई ऐसा नहीं आता कि मुझे स्क्रीनिंग कराना है और मुझे डिटेक्ट करना है। ज्यादातर पेशेंट जो 90 to 95% पेशेंट आते हैं वो मोटा मोटा डायग्नोस्ड होके आते हैं कि हाँ है कैंसर। सो वो डायग्नोसिस के साथ ही एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ, एक टेंशन, एक फेस में ही आप देखोगे, फेस स्टडी करोगे, दे आर डिस्ट्रेस्ड। सो इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, मॉनिटर्ड, डॉक्यूमेंटेड एंड ट्रीटेड अकॉर्डिंगली, एंड स्क्रीनिंग शुड आइडेंटिफाई द लेवल एंड नेचर ऑफ डिस्ट्रेस। तो डिस्ट्रेस का बेसिकली एक स्केलिंग होता है, 0 to 10 स्केलिंग होता है। 10 इज द मैक्सिमम डिस्ट्रेस, 0 इज द मिनिमम नो डिस्ट्रेस एट ऑल। तो बेसिकली 4 का एक आर्बिट्ररी लेवल है कि 4 के नीचे है स्कोरिंग, तो इट इज अ लोअर लेवल डिस्ट्रेस, माइल्ड डिस्ट्रेस। 4 के ऊपर है तो इट इज मॉडरेट टू सिवियर डिस्ट्रेस। सो आइडियली पेशेंट शुड बी स्क्रीन्ड फॉर डिस्ट्रेस एट वेरी फर्स्ट every medical visit, and distress should be assessed, managed according to clinical practice guidelines. Interdisciplinary institutional committees should be formed, जो इसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी होते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी होते हैं, जो साइकेट्रिस्ट भी होते हैं, जो सोशल वर्कर है वो भी होते हैं, and counselors are also an integral part of that. Education and training program should be developed to ensure that the healthcare professionals, certified chaplains, knowledge and skills in the assessment and the management of distress. Licensed mental health professional and certified chaplains experienced in the psychosocial aspect of cancer should be available. Medical care contract should include the cover of this mental health professionals. Clinical health outcome measurement should include assessment of psychosocial domain, जो ज्यादातर टाइम हम एड्रेस नहीं करते in big centers also, that is not adequately addressed. Patient, family and treatment team should be informed that distress management is integral part of the total medical care. Quality of distress management program and services should be included at institutes. So how do we divide? Basically, जैसे मैंने बताया कि score of 4 mild है, तो mild scoring है, mild distress scoring है, तो वो primary oncology team plus उनके साथ जो social worker और psychologist है वो मिलके उसको treat कर सकते हैं. But if it is score is more than 4, तो हमें तो और हाई रिस्क पेशेंट के लिए
पीरियड ऑफ वल्नरेबिलिटी, रिस्क फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रेस सब असेस करके जो लोग हाई रिस्क पेशेंट है तो वहां पे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट उनका हेल्प हमें लेना है. वी हैव टू रेफर टू दोस सुपर स्पेशलिस्ट. अच्छा, हम कैसे ये हाई रिस्क पेशेंट हम कैसे देखते हैं? बहुत लोग ऐसे आते हैं, यंग पेशेंट है, अनमेरिड है, मैरिजेबल एज पे है, अनमेरिड है, जिनका बहुत बार ऐसा भी होता है कि जिनका एकदम शादी के बाद ही इमीडिएटली डिटेक्ट हुआ, दे आर एट ए डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेस, या शादी से पहले, शादी के बाद चल रहा है, शादी फिक्स्ड है, उस टाइम में डिटेक्ट हुआ, या यंग कपल है, फैमिली कंप्लीट नहीं हुआ है एंड एट दैट टाइम दे आर ट्राइंग फॉर द फैमिली बट उस टाइम में डिटेक्ट हुआ है, या जो लोग सिंगल पेरेंट है उनका हो गया, या जो लोग हाई रिस्क बिहेवियर के कारण जो लोग पॉजिटिव सेरो पॉजिटिव है फॉर हेपेटाइटिस बी और अदर viruses for at-risk behavior, because हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन होता है या कोई अलग वायरस जैसे HIV होता है, वो अपने आप एक रिस्क फैक्टर है फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी कैंसर्स. तो उसमें भी वो लोग भी एक अलग लेवल ऑफ रिस्क में आ जाते हैं, बिकॉज इनकी घर में जो फैमिली मेंबर का सपोर्ट है वो सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता. देन देयर आर मेनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. जो लोग सिंगल पेरेंट है, इनका इंश्योरेंस कवर एडिक्वेट नहीं होता. मोस्ट ऑफ द टाइम एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर के कारण भी जो फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ जाते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स है, फैमिली. So these are all the patients who are at high risk of development of psychosocial problem. Then fear and worry about the future, concerned about the illness, what will happen for those who are been detected with the stage 4 disease, sadness and the loss of usual health, anger and feeling out of control, then poor sleep, appetite, poor concentration, which is very common with the chemotherapy, preoccupation with the thoughts of illness and death, and concern with the disease or the treatment side effects, and concern about the social role as a father, as a mother, as a kid, and the spiritual and existential concern are also there. Why we are living, often I have seen the question is arising in the patient, what is the purpose of living? And then they are the patient who need even spiritual support. And often I advise my patient to have a regular exercise. If they cannot go for the regular exercise because of body ache or the many factors, at least half an hour of walk in the morning and half an hour of walk in the evening is very important and very soothing. Then always we have an armamentarium of the drugs for management of all this depression and psychosis. We have anxiolytic, hypnotic, antidepressant and all. Then basically apart from the drug, we can help them with the yoga session, relaxation, meditation, creative therapies like as one of our young attendees have asked about music therapy. Music therapy has a definite role because those who are going for the stress, it is no role for as such for the prevention or cure of cancer, but it has role for the supportive. It has a supportive character. It plays a role of supportive character for reducing the stress level of the patients through which they are going. I have seen many patients while they are going for chemotherapy in the daycare, they are playing music, loud music. So they enjoy that. And probably that is a stress buster for them. So that is distress scale, what I was mentioning about. 0 is no distress, extreme distress is this is a visual scale. And then the problem list, also you have a checklist of physical concern like pain, sleep, fatigue, tobacco. Fatigue is also a very important aspect. जो मीनू वालिया मैडम बोल रहे थे कि हम लोग के पास बहुत सारे oral tablets है and all these things. Most of the oral tablets की एक important side effect है कि fatigue. 60 to 70% of the people who are on oral tablet across all the groups, they have important side effect like fatigue. So that is another important area where we have to give stress. Then memory or concentration, lack of memory or concentration is another important area where the most of the patient complain about.
then loss of sexual life. There is another important area where we, most of the time I've seen my colleagues, they don't ask about that. So that is also important. Emotional concern, worry or anxiety, sadness, social concern, relationship with the spouse or partner, relationship with the children. Even I have seen the patients who are being abandoned by the family. Then practical concern of taking care of myself, taking care of family, work, school, housing, etc. So the patient at increased risk for the distress, history of psychiatric disorder or depression, or those who were the substance abuse, history of depression, suicidal attempts, history of trauma and or abuse, cognitive impairment, communication barriers, severe comorbid illness like diabetes, arthritis, or advanced rheumatoid arthritis, rheumatic disease, or family caregiver conflict, inadequate social support, etc. Then periods of increased vulnerability like finding and investigating on a suspicious symptom, during diagnostic workup, finding out the diagnosis, advanced cancer diagnosis, and then communicating that advanced cancer diagnosis. That is also important. Learning about the genetic familial cancer risk, that is a very important aspect nowadays, because there are 4 major types of cancer, which is a very important genetic factor. Apart from the breast cancer, prostate cancer, pancreatic cancer, ovarian cancer, they have a strong genetic and familial history. So all those cancers have to be tested for the genetic or familial cancer risk. Recurrence progression again give rise to stress to the patient and the survivors. Then how they are being managed, we have to first find the sign and symptom of anxiety, generalized anxiety disorder, panic disorder, and the specific phobia, and accordingly we have to evaluate and treat them for the primary disease, as well as the treatment for the nausea, vomiting, medications, and medication induced. It may be sometimes the depression and psychosis can be medication induced, the medication they are taking for the treatment of cancer itself. And chaplaincy care is another important aspect where most of the time we forget about that. That religious support is also important. We have to find out the religious values of the patient and whether we can help in that aspect also. That is also important aspect where we should take care of that. These are all management guidelines for the for the physicians, and they have to develop the team work for treatment of psychic and depressive behavior of the patients. So basically, interventions are interdisciplinary committee tailors the standard of institutional setting, distress thermometer. It is 0 to 10 scale, and the problem list screening tool in the clinics and inpatient setting, problem list, education of the primary oncology team via the rounds and liaison with the nurses and social workers, and then surveys, and then professional attitude, knowledge and assessment of those findings, and churning on those findings, and then work on those areas, and at the patient level, reduce distress and improve the satisfaction level. That's all from my side. So Thank you so much. Any question? Yes, ma'am. Close relative of mine is currently battling with cancer, and they would not talk to each other, and nor they would share their feelings with us, and the environment was very negative. So why is it that people are still ashamed to accept the fact they have been diagnosed with cancer, and what can we do about it? Basically, it is because of the misinformation. Most of the time, it is because of the misinformation that the cancer is lethal, cancer can cause death or cancer, because many of our patients, those, especially those who were diagnosed in the early stages, are living for, we have a list, it is not 1 or 2 patients. The people have long life, 10 years, 15 years, 20 years, plethora of patients in all the hospitals, all the clinicians who are practicing for more than 10, 15 years. They will have a long list of patients who are surviving for a long time. And even stage 4 disease also, survival is increased dramatically. As I have said, I have at least 10, 12 patients who are living with cancer for last 20 years.
So 20 years with the stage 4 disease is tremendous. And the other aspect is, like, as we know, the breast cancer, and it is one of the diseases where we can diagnose very early stage, even stage 1 or stage 2. And the stage 1 and stage 2, these are curable disease, and only with the surgery we can cure. In the stage 1 or stage 2 disease, even they may not require radiation or chemotherapy. So when radiation chemotherapy is not required, it not only the survival, it is also your the cost of the therapy is reduced. So why they do not communicate, they do not want to interact or do not want to convey to their relative, is that it is because of the social stigma that with the diagnosis of cancer, it is the people will come and they will come to their house and they will show false sympathy, and under the stress of the visitors, the patient may feel low. जो मुझे लगता है कि अटेंडेंट आएंगे आसपास के, तुम्हारा कैंसर हो गया, बस तुम तो बस, कोई आके, मतलब लोगों को तो इतना भी मैंने देखा है, आपने आंखों मतलब सामने ही देखा है कि आके बोल रहे कि आप तो बचोगे नहीं. सो ऐसे बातें नहीं करना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो हाउ टू टॉक. सो ये भी बहुत लोग ये भी अवॉइड करना चाहते हैं. सो देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ इट. एक तो विजिटर अवॉइड करना चाहते हैं, बिकॉज केमोथेरेपी के दौरान हम बोलते हैं कि आप विजिटर ज्यादा ना हो, आपके पास ज्यादा ना हो, बिकॉज यू आर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, आपको इन्फेक्शन लग जाएगी, एंड समटाइम इन्फेक्शन कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. उसके लिए हो सकता है कि विजिटर कंट्रोल करने के लिए भी ये लोग ज्यादा बात नहीं करते इस बारे में. दूसरा ये है, जैसे मैंने बताया, डॉक्टर वालिया ने भी डिस्कस किया कि एक पार्ट है फैमिली हिस्ट्री and the family risk stratification and the BRCA testing and all these things we are routinely doing for the breast cancer patients. तो एक पेशेंट आए जिनका BRCA टेस्टिंग हमने कराया, जिनका पॉजिटिव आया, तो मैंने बताया कि इट इज योर ड्यूटी टू इन्फॉर्म योर सिस्टर्स. उनके सिस्टर थे, 2-3 सिस्टर थे, आप सिस्टर को इन्फॉर्म करो और अकॉर्डिंगली आप उनको भी बताओ कि वो लोग भी अपना BRCA टेस्टिंग कराए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उन लोगों को भी पता चले कि वो लोग भी एक टाइम पे एक्शन ले सकते हैं. उन्होंने मना कर दिया सीधा, नहीं 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 हम नहीं बताएंगे. क्यों नहीं बताएंगे? बिकॉज वही स्टिग्मा कि इट इज ए फैमिलियल डिजीज, कि आपका एक जीन है ऐसा जिससे आपकी फैमिली में स्प्रेड हो सकता है. अब डर ये है कि सिस्टर ने टेस्ट करा लिया और सिस्टर का नहीं आया, तो सिस्टर जाकर हर जगह बताएगी, अरे इसका तो ये है, इनके जीन में है. प्रॉब्लम क्या होगा? अल्टीमेटली उनकी बेटी की शादी में प्रॉब्लम हो सकता है. सो दैट वाज देयर थिंकिंग कि बेटी में भी होगा ये दिक्कत है. तो बेटी की अनमेरिड डॉटर थे उनके 2. तो देयर आर मेनी, इट इज ए मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम. इट इज नॉट दैट इजी टू से कि क्यों एक्सेप्ट नहीं करते, क्यों डिस्कस नहीं करते, क्योंकि इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी इतना ओपन नहीं है. आज के डेट पे भी हम जितना भी बोलते हैं कि हम चांद पे पहुंच गए, मंगल में पहुंच गए, एंड ऑल दिस थिंग्स, बट इंडियन सोसाइटी इज इंडियन सोसाइटी. यू नो, देयर आर मेनी थिंग्स इन्वॉल्व्ड. आज भी इंडिया में सबसे ज्यादा अरेंज मैरिज होते हैं. तो जहां भी अरेंज मैरिज होगा, आप जाके बताओगे कि BRCA पॉजिटिव है मदर में और बच्चों में, तो शादी में दिक्कत तो आएगी ना. Thank you so much, sir, for enlightening us. I'll request our head of Adolescents Club, Megha, to give a vote of thanks to our guests. Thank you so much. I'm so sorry I'm traveling. That's why I'm in my mask. So firstly, a very, very, very big thank you to all the speakers for such insightful sessions. We got to know so much and you took out your time to educate us all, because as I was listening, I could figure out very well that the main problem which is there, especially in our country, is the lack of awareness. So this is our first step to battle cancer, because one day we are all positive, as Meenuwalia ma'am said, that cancer will be just thought of as a zodiac sign. As Dr. Kumardeep said, that most of the problems arise because there is misinformation. So this is our effort to just vanquish that misinformation and spread positivity, spread awareness, and therefore
actually make way to a more healthy country. So thank you so much. And I really feel that every life counts, every life. So those of you who couldn't even attend probably this session, our session will be there on YouTube. So please share with your friends, with your family, encourage them to listen to it. We give really good, authentic information which should be known by everybody. So please ask them, even if we can make someone's life better, and even if we can save one life, all the efforts will be worth it. So thank you so much. And of course, thank you to Ms. Jyoti Goel, who helped us organize this event. Thank you to our directors, Dr. Shreya, Dr. Saurabh Kole. Thank you to all my team members who are here. Thank you, Lavanya, for your anchoring and coordination. Thank you, Sagnik and Akansha, for coordinating the questions. And thank you to all my team members involved. Thank you to all the school students who have joined in, all the teachers who have joined in. Thank you. Thank you so much. So stay tuned with us, and we'll be meeting very soon again with another insightful session for all of you. Thank you.